मैं ऑडिबल बेटा? प्रज्वल, अर्पिता, आरोही, ओके ओके. So fifth standard environmental science, fifth standard EVS. मॅम तुम्हाला त्याला 4 ला आणा म्हटलं की नाही? कोणी आणा? मग 4 ते 6 2 तास होते ना मॅच. आता 7 वाजलेत ना. हो व्हॉट्सअप कर. मी बोलते तुझ्याशी. उद्या येऊनच जाणं 4 ला. उद्या यायचं आणि मला 8:30 ला कॉल केला तरी चालेल. So fifth standard yes recording I'm sending on the group. ओके recording मैं ग्रुप पे शेयर करने वाली हूँ. प्रज्वल ओके बेटा, प्रज्वल बाहिती, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की भी रिकॉर्डिंग में शेयर करने वाली हूँ. सो बोर्ड इज विजिबल टू यू all of you, especially online students. Okay, so fifth standard EVS science, actually ये state board का book है. From this book you have to read some chapter. Okay, इसमें से now you have vacations, you have extra time. Okay, and there are some questions which are based on fifth standard. Okay, 5 7 at least 10 questions भी आपको अच्छे से fifth standard के बेस के है, इजी है, तो आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए. सो फर्स्ट चैप्टर दैट इज अवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम. ओके, जो कि आपका ऑलरेडी स्कूल में हो भी गया होगा. ओके, अवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ये चैप्टर आपको कंपल्सरी रीड करना है, जो मैं ईवीएस की बुक शेयर करने वाली हूँ उसमें से. ओके, कुछ नहीं, सभी प्लैनेट्स और प्लैनेट्स की शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिए हैं. ओके, सोलर सिस्टम की जनरल इंफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ अर्थ. ओके, मोशन ऑफ अर्थ. ओके, ये भी चैप्टर आपको रीड कर लेना है उसमें से. ओके, फिफ्थ की जो ईवीएस की बुक है उसमें से. देन नेक्स्ट वन, द अर्थ एंड लिविंग वर्ल्ड. द अर्थ, यस बेटा, काउंट फर्स्ट. द अर्थ एंड लिविंग वर्ल्ड. ओके, ये भी चैप्टर आपको फिफ्थ ईवीएस की जो मैं पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ, वो पीडीएफ में से आपको ये भी चैप्टर कंपलसरी रीड कर लेना है. देन नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल बैलेंस. नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल बैलेंस. ये भी चैप्टर आपको रीड कर लेना है उसमें से. ऑलरेडी माय रिकॉर्डेड वीडियो आर प्रेजेंट्स. ओके, ये जो ये नहीं, बट बाकी के चैप्टर्स के माय रिकॉर्डेड वीडियो आर अवेलेबल, यू कैन वॉच दैट वीडियो. ओके, देन नेक्स्ट वन आपको रीड करना है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, फूड फॉर ऑल. ओके, फूड फॉर ऑल. वहां पे चैप्टर नंबर 12 है, बट मैं अभी सीरियली लिख देती हूँ. Okay, then chapter number 13, method of preservation of food. Methods of preservation of food. इसके मेरे recorded video है, आप सबको वीडियो देख लेना है. Okay, method of preservation of food. Then after that next one, that is water chapter. ओके, वाटर चैप्टर ये जो है ये भी आपको रीड कर लेना है. देन नेक्स्ट वन, यस फिफ्थ स्टैंडर्ड ना, यस फिफ्थ स्टैंडर्ड का ही है ना ईवीएस का बुक. ओके, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वन. ओके, वाटर के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ.
ये साइड पे। ओके, देन नेक्स्ट वन आपको रीड करना है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। ओके, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, इसके भी वीडियो है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, इसके भी इसका भी मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है। इवन टेस्ट भी है। ओके, कौन कौन से चैप्टर के हैं मैं बताती हूँ। देन नेक्स्ट वन बिजी एट वर्क, इंटरनल ऑर्गन पे है। बिजी एट वर्क, सिस्टम दी है उसमें, digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system. Then next one, infectious disease and how to prevent them. Infectious disease and how to prevent them. ये भी चैप्टर आपको रीड करना है। शॉर्ट है, जस्ट 2 to 3 पेजेस के, डोंट वरी। देन substance, object and energy. Substance, object and energy. ओके, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी, ये भी चैप्टर आपको जो 5th स्टैंडर्ड की साइंस की ईबीएस की बुक है, एनवायरमेंटल साइंस की, इसमें से आपको रीड करना है। ओके, सो ये जो चैप्टर है फूड फॉर ऑल, इसकी मैंने टेस्ट बनाई है। 25 मार्क्स के क्वेश्चन की टेस्ट है। आप पहले अच्छे से रीड कर लो, उसके बाद मैं आपको टेस्ट की लिंक शेयर कर दूंगी। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, इसकी भी एमसीक्यू की टेस्ट रेडी है। बिजी एट वर्क, इसकी भी टेस्ट है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड, इसकी भी टेस्ट मैंने बनाई है। इन्फेक्शियस डिसीजेस, इसकी भी टेस्ट बनाई है। देन सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी, इसकी भी टेस्ट मैंने बनाई है। ओके, पहले आप क्या करो, डे बाय डे, वन बाय वन आपको क्या करना है, चैप्टर डेली 1 चैप्टर आपको रीड करना है। ओके, एंड आपका चैप्टर रीड होने के बाद मैं आपको ग्रुप पे एक एक टेस्ट शेयर करने वाली हूँ। जो बच्चे पहले से ज्वाइन है उनके बहुत से टेस्ट हो गए, 4-5 टेस्ट हो गए। यस ना रणवीर, टेस्ट दिए हैं ना तुमने? ओके, जो पहले से है, तो आपको क्या, जो न्यूली ज्वाइन है इनको क्या करना है, ये सभी चैप्टर रीड करना है। रीडिंग करने के लिए पीडीएफ में शेयर करती हूँ। ओके, रीड करना है। रीडिंग होने के बाद जो एमसीक्यू टेस्ट है, वो एमसीक्यू टेस्ट में आपको शेयर करने वाली हूँ। ओके, जस्ट नोट डाउन द नेम्स ऑफ चैप्टर्स। Completed, you have note down? Yes, okay, yes, सभी चैप्टर आपको रीड कर लेना है। एक्स्ट्रा वर्क है, 5th स्टैंडर्ड का है। ओके, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं 5th स्टैंडर्ड के बेस, इजी इजी भी क्वेश्चंस आते हैं। होमी बाबा में 70 अबव मार्क्स लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो डे 1 से पढ़ाई करता है उनको 70 अबव क्या 80 अबव भी मिलते हैं। जो पहले से पढ़ाई करता है डे 1 से, उनको 70 क्या 80 अबव भी मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। ओके, हाई स्कोर लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है होमी बाबा एग्जाम में। सिर्फ आपको रीडिंग करना है, 2-3 बुक्स में से लर्न करना है, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करना है। ओके, सो यस बेटा, आई विल शेयर ऑन द ग्रुप।
ओके, फिर से फोटोसिंथेसिस रिपीट होने वाला है। ओके, CO2 प्लस H2O, इट गिव्स C6H12 O6। ओके, मैं रिपीट अगेन ऑन द ग्रुप, उसकी इमेज शेयर कर दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कंटिन्यू टू अवर टॉपिक, वी हैव स्टार्टेड विच चैप्टर? Food and its sources. Yes, yes beta, yes, glucose, yes, along with this carbon dioxide is also. Okay, so I have started the chapter, that is chapter number 1 from the CBSE book, that is food and its sources. Okay, food and its sources, this chapter I have started. Okay, yes ना, ये चैप्टर स्टार्ट किया है ना, फूड एंड इट्स सोर्सेस। ओके, so we need the food because food gives us the main one, that is energy. Okay, then a staple food, that definition I have already taught you. Dish, ingredient, we obtain the food from different sources. Now we obtain the main two sources, that is the plant source and next one animal source. Now from the plants we obtain the food from the root, stem, flower, then leaves, then fruit, then seeds. Okay, so those are the parts of the plants from which we obtain the food. Again, next one, we obtain the food from the animals. Okay, food from animals. I have already told you that is salt. It is not nor plant source or neither animal. Okay, plant source भी नहीं है. Salt. Yes. ओके, सो नेक्स्ट वन, दैट इज फूड फ्रॉम द एनिमल। हम जो भी फूड खाते हैं, हमें फूड किससे किससे मिलते हैं? या तो प्लांट से मिलते हैं, अदरवाइज एनिमल्स। ओके, यस, two sources of food है main, that is the plant source and next one, that is animal source. So animal provide us variety of the products. Okay, so yesterday we have discussed first one, that is the milk, and yesterday we end with the milk. Yes, yesterday का हमारा last topic कौन सा था? Milk. Yes, so we obtain the milk from the cow, goat, buffalo, camel, sheep, reindeer. Okay, like this animal gives us the milk, and those animal which give the milk, they are called milk animals. Okay, and the milk product such as paneer, butter, cream, cheese, curd, buttermilk, okay, ghee, so many are the milk product, and that milk product is called dairy product. Okay, and in the milk there is a one sugar is present, and that sugar is called lactose. ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको टाइप ऑफ शुगर सिखाने वाली हूँ। ओके, सो मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? दैट इज द लैक्टोज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज एग। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज एग, it is also animal product. Okay, so hen, geese, duck are the some of the birds that give the eggs, and those birds are called poultry birds. Okay, those birds, animals gives the egg, they are called poultry, and egg is the rich source of protein, vitamins, small fats be present है. Okay, egg is the rich source of protein. Now next one, meat. Okay, next one, that is the meat. We obtain the food from plants also, we obtain the food from the animals also. So meat mainly comes from the hen, goat, sheep, duck. Okay, a large population of the world is depend on the meat
एज अ स्टेपल फूड। ओके, ऑल वर्ल्ड में, ओके हम इंडिया का नहीं, ऑल वर्ल्ड का यदि थिंक करेंगे तो जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है उनका स्टेपल फूड क्या है? मीट। ओके, जैसे हमारा स्टेपल फूड क्या है? विच वन इज अवर स्टेपल फूड? सीरियल्स। ओके, हमारे स्टेपल फूड में क्या आता है? सीरियल्स। ओके, सीरियल में फिर हम व्हीट खाते हैं, राइस, ज्वार, बाजरा, कॉर्न। ओके, हम सीरियल्स बोलेंगे कॉमन। ओके, वैसे ओके लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड उनका स्टेपल फूड, इंडिया छोड़ दो, हम पूरे वर्ल्ड का यदि थिंकिंग करेंगे तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड eat meat. Okay, they eat the meat. So meat is the staple food, and you know the meaning of staple food, the food item which we eat on a large proportion on a daily basis, that is called staple food. Okay, now next one, that is fish. Okay, next one, that is fish. So many kind of fish are also eaten as a food on large population of the world. Okay, people living in the coastal region mainly depend on the fish and other seafood. Okay, other भी seafood होते हैं. For example, yes, okay, seafoods. Okay, so many kind of fish are also eaten as a food by the large population of the world. मेनली कोस्टल रीजन में जो लोग होते हैं वो फिश से अलग अलग डिशेस बना के खाते हैं, उनके डाइट में, उनके फूड में फिश प्रेजेंट होता है. Okay, now next one, that is animal product, that is the honey. Okay, next one, that is the honey. Okay, so bees. Okay, bees collect the sweet juice, and that sweet juice is called nectar. Okay, bees collect the sweet juice, and that sweet juice is called nectar, and that sweet juice they collect in a beehive. Okay, sweet juice किसमें collect होता है? That is the beehive. So bees collect this sweet juice, nectar, and that collected in the beehive, it is the sweet. Okay, it is the thick, sweet liquid, and these honeybees collect throughout the year. Okay, it collect that honey throughout the year, and we are using that honey as a sweetener. Okay, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ओके आयुर्वेदिक मेडिसिन में हनी यूज करते हैं. नो हनी इज नो, हनी स्टेपल फूड नहीं बेटा. स्टेपल फूड मीन्स जो हम ज्यादा प्रपोर्शन में खाते हैं. अद्वित चौधरी, आप हम खाना खाने बैठे तो हमारे प्लेट में सबसे ज्यादा चपाती होती है, बराबर है ना बेटा? तो चपाती क्या हो गया? स्टेपल फूड. आप साउथ इंडियन खाना खाने बैठे, आपके प्लेट में क्या ज्यादा है? राइस. तो राइस, हनी थोड़ी हमारे प्लेट में इतनी होती है. ओके बेटा, क्लियर? हनी इज मेडिसिन फॉर द कफ. यस, हनी एज अ मेडिसिन हम यूज करते हैं. ओके, जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है. ओके, स्टेपल फूड मीन्स जो हमारे प्लेट में ज्यादा होता है. सपोज आप खाना खाने बैठे तो आपके प्लेट में चपाती ज्यादा होती है, दाल थोड़ी सी होगी, राइस थोड़ा सा होगा, सलाद थोड़ा सा होगा, बराबर है ना? आपके प्लेट में ज्यादा क्या होता है? राइस. राइस साउथ इंडियन होंगे तो राइस, अदरवाइज चपाती, नहीं तो कोई कोई लोगों के इसमें भाकरी. क्लियर बेटा? अद्विक, जस्ट टाइप द मैसेज, इज इट ओके बेटा? स्टेपल फूड का मीन्स जो हम लार्ज प्रपोर्शन में खाते हैं. हनी इज नॉट स्टेपल फूड. ओके, हनी स्टेपल फूड नहीं है, बट वी आर यूजिंग द हनी एज द मेडिसिन. आपको यदि कफ हो, कॉमन कोल्ड, यस, जिंजर एंड हनी मिक्स करके आपकी मम्मी आपको देते होंगे एज अ मेडिसिन. इट इज द स्वीटनर. Okay, honey is natural sweetener. It is used in the medicines. कौन बाबा सोडता है का?
So honey is the natural sweetener. Okay, so understand about the animal product. Here just fastly show me thumb. Be active बेटा, आपको मैसेज करना है क्योंकि बाद में ही मुझे आपको समझ में आ गया. Okay, so milk, egg, meat, fish, honey. Okay, those are the animal product. Now mushroom is also we are using. Okay, so those are neither plant nor animal. ओके, मशरूम प्लांट्स में भी नहीं है, मशरूम एनिमल्स में भी नहीं आते. सो मशरूम इज इन द ग्रुप दैट इज कॉल्ड फंगी. ओके, आप सब मशरूम्स होटल में जाते होंगे तो मशरूम सूप पीते हैं, मशरूम की वेजिटेबल्स खाते होंगे, मशरूम के जो भी कुछ है. ओके, मशरूम आप खाते हो, मशरूम्स. ओके, सो मशरूम एक्चुअली क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो प्लांट्स में भी आता नहीं है, एनिमल में भी नहीं है. देयर इज अनदर ग्रुप दैट इज कॉल्ड फंगी. ओके, फंगस और फंगी. सो मशरूम contain several important vitamin and minerals. ओके, मशरूम में भी विटामिन मिनरल से अच्छे होते हैं, खाने के लिए न्यूट्रिशियस होते हैं. ओके, सो अंडरस्टैंड, मशरूम प्लांट भी नहीं है, मशरूम एनिमल भी नहीं है. एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या लिखना है आपको? लिखना तो नहीं, एग्जाम में सिर्फ सर्कल करना है, फंगस. ओके, फाइनल एग्जाम में आपको कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, 4 ऑप्शन है, उसको आपको उसमें से जो करेक्ट है उसको आपको सर्कल करना है. राइटिंग है ही नहीं फाइनल एग्जाम में. क्लियर? नाउ food habitat of the animal. There are the different animal and different animal eat the different type of food. Okay, so plants make their own food. Okay, plants. बेटा मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? पनीर है, बटर है, क्रीम है, चीज है, कर्ड है, बटर मिल्क है, घी है. दस आर द मिल्क प्रोडक्ट. ओके, दस आर द मिल्क प्रोडक्ट. Okay, now depending on the food habitat, classification of the animals. See again, plants say plants make their own food. Plants क्या करते हैं? खुद के फूड खुद बना लेते हैं. What about the animals? Animals बनाते हैं खुद का फूड? No. Animals are depend on the either plants or either other animals. Okay, so animals cannot prepare their own food. They are depend on plants or other animal. So depending on, okay, depending on the food habitat, animals are also classified. Okay, again rearing of honeybee, that is called apiculture. Okay, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया. ओके, एपीकल्चर तो आपको पता रहना चाहिए. अभी मैंने हनी हनी सिखाया ना, दैट्स व्हाई दिस वन इज द एक्स्ट्रा पॉइंट. एपीकल्चर मींस rearing of honey bees. Okay, to obtain the honey bee को पालना. Okay, rearing of honeybee to obtain the honey. That branch is called apiculture. Clear? Okay, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको पता रहना चाहिए. एपेरी. ओके, यस, उससे ही एपीकल्चर वर्ड फॉर्म हुआ है. Okay, apiculture, rearing of honey bee to obtain the honey. That is called apiculture. Now, next one, depending on the food habitats. Okay, animals are classified into different categories. So, first category, that is the herbivores. हर्बिओरस भी बोलते हैं, हर्बिओर्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोला तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हर्बिओर्स, हर्बिओरस. ओके, देन नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द कार्निवोरस. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कार्निवोरस.
और कार्नियोरस बोला तो भी चलता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी, यस इजी है, आपका ऑलरेडी हो गया होगा, ओमनियोर्स और ओमनियोरस। देन नेक्स्ट वन दैट इज, यस ओके, नेक्स्ट वन दैट इज स्कैवेंजर्स। Then next ones, okay, after scavengers, host and parasites. Okay, next one term that is host and parasites. And next one that is decomposers. Next one that is decomposers. So those are the classifications of animals. Board is visible. Okay, board is visible to you, all my dear students. Okay, so herbivorous, carnivorous, then next one omnivorous, then next one scavengers, host and parasites, and then decomposers. Again, very easy term hai. So first one that is herbivorous, the animal that eat green plants. Okay, green plants, plant eater. ओके इन शॉर्ट हम उसको क्या बोलते हैं, प्लांट ईटर्स. सो हर्बा मीन्स प्लांट and over means eat, to eat. So plant eater, those animals which eat the plants, they are called herbivorous. Example is cow, goat, sheep, buffalo, horse, deer, elephant, okay, and so many, आपको भी पता है. Okay, so today's homework is you have to make the list of herbivores. ओके आज का होमवर्क क्या है, मैंने तो बहुत से एग्जांपल बताए, इसके अलावा भी आपको लिस्ट बनानी है. सो टुडेज होमवर्क इज मेक द लिस्ट ऑफ ऑल. ज्यादा नहीं लिखना, डेफिनेशन वगैरह वो तो आपको आती है. ओके, राइटिंग से ज्यादा रीड करो, लर्न करो. मैंने क्या बोला, आपके ब्रेन में फिक्स करो. ब्रेन में रहा ना तो आप कितने भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, और नोटबुक में रहा तो नोटबुक में ही रह जाएगा. ओके, बेटर वे लर्न. ओके, लर्निंग करो, आपके ब्रेन में सभी. मैंने पूछा होस्ट एंड पैरासाइट, तुरंत आपको एग्जांपल्स आने चाहिए. मैं तो सिखाने वाली हूँ. ओके, बट आपको भी लर्न करना है. एंड राइटिंग शॉर्ट, शॉर्ट में सिर्फ एग्जांपल्स वगैरह. ओके, मम्मी पापा में ज्यादा राइटिंग नहीं, क्योंकि राइटिंग करते बैठे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. मैंने क्या बोला, मुझे ये 17 चैप्टर सिखाने हैं, अगले सर के बुक में के 38 चैप्टर सिखाने हैं. इतना सिखाना है, राइटिंग करते बैठे तो हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. सो बेटर वे आप घर पे ही नोट, खुद के ओन नोट्स बनाओ, बट उसमें भी ऐसा बिग बिग मत लिखो, शॉर्ट शॉर्ट्स. ओके, फॉर एग्जांपल herbivorous, plant eater, and directly examples. So today's homework is you have to write down the example of herbivores, carnivores, omnivorous, scavenger, host, parasite, and decomposers. ओनली एग्जाम्पल आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है. मैं कभी भी आपकी नोटबुक चेक कर सकती हूँ, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट आपकी भी. मैं आपके मम्मी को वीडियो कॉल करूंगी, मम्मी को बोलूंगी उनकी नोटबुक बताओ. मैं आपकी भी नोटबुक कभी भी चेक कर सकती हूँ, आपकी तो करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो एनिमल दैट ईट only plants are called herbivorous, plant eater. For example, cow, goat, sheep, buffalo, horse, deer, elephant are the few examples. इसके अलावा भी है, they are called herbivorous. So which is the main, as much many, आपको जितने पॉसिबल है उतने एग्जांपल्स लिखना है. सो does animal have sharp cutting teeth in front? ओके, ये जो हर्बिवोरस एनिमल है उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताती हूँ बेटा. सानवी मैं ऑलरेडी बताने वाली हूँ एग्जांपल्स. ओके, सो हर्बिवोरस एनिमल हैविंग शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट, उसके सामने वाले जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प, दैट हेल्प फॉर कटिंग. शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट एंड बिग एंड वाइड टीथ एट द बैक. बैक के टीथ उनके कैसे होते हैं, बिग एंड वाइड, क्योंकि उनको ग्रास जो है चिविंग करना रहता है ना. यस यस, मोलर प्रीमोलर्स. ओके, सो सामने वाले टीथ कैसे होते हैं हर्बिवोरस के, शार्प पॉइंटेड, एंड बैक साइड के टीथ कैसे होते हैं, बिग एंड वाइड.
which help for the grinding. Okay, now many birds such as parrot, pigeon eat only seeds, okay, and nuts and fruits. So the bird having the hard pointed beak. Birds को teeth होते हैं? No. ओके, सो उनको क्या होते हैं? यस, हार्ड, ओके, पॉइंटेड, शार्प पॉइंटेड बिग टू कट द फ्रूट्स, नट, सीड. उनका फूड क्या है? सीड है, फ्रूट्स है, नट है. सो देयर बिग इज पॉइंटेड एंड शार्प. नाउ इंसेक्ट, इंसेक्ट को भी टीथ है क्या? उनको तो खाना खाना है. सो इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई, हनी बीज. Okay, so their food is nectar, sweet juice. So they have mouth like part. इंसेक्ट को टीथ नहीं है, बट उनको फूड लेना है. फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट को क्या लेना है? स्वीट जूस लेना है, नेक्टर, स्वीट जूस, दैट इज कॉल्ड नेक्टर. तो इंसेक्ट को माउथ पार्ट होता है, ओके, टू सक, okay, to suck the sweet juice, and that mouth part is called proboscis. Okay, insect having a special mouth part that is called proboscis. So this proboscis help the insect to suck the nectar from the flower. Caterpillar, grasshopper, beetles feed on the tender leaves. Okay, now next one, that is carnivores. Okay, animal that eat the flesh of other animals. Okay, it eat the flesh of animal eater बोल सकते हैं हम, shortly बोलना है तो animal eater. It eat the flesh of other animal, that is called carnivores. Example is lion, leopard, tigers. Okay, and so many. Okay, we just discussed 2 3. Lion, tiger, then leopard are the few example of carnivores. So those animal have long sharp pointed teeth. उनके भी टीथ कैसे है? लॉन्ग है, शार्प है, पॉइंटेड है. ओके, टीथ ऑफ lions. Then frog have long sticky tongue. फ्रॉग को क्या होता है? लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच द इंसेक्ट. आपने देखा है कभी फ्रॉग को इंसेक्ट कैच कर? ओके, उसकी जो टंग होती है लॉन्ग है, स्टिकी है, वो लॉन्ग स्टिकी स्टक इंसेक्ट को क्या करती है? कैच करती है. सो दिस वन इज अबाउट द कार्निवोरस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ओमनिवोरस. दोज एनिमल विच ईट बोथ, प्लांट्स भी खाते हैं एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, दोनों खाते हैं. उनको क्या टर्म है? ओमनीवोरस. ओके, वेरी गुड एग्जांपल इज ह्यूमन बीइंग. ओके, यस, ह्यूमन बीइंग, बियर, hedgehog, rat, dog, crow, pig, cat, cockroach, and like this. Okay, these are the example of omnivores. Very good example is human being. ओके, कॉमन एग्जाम्पल ओमनिवर्स का क्या है? ह्यूमन बीइंग. मैं रिपीट अगेन, ह्यूमन बीइंग, बियर, hedgehog, रैट, डॉग, क्रो, कैट, pig, cockroach are the omnivores. Okay, now next one, that is scavengers. Okay, so scavengers are animal or bird. Scavenger क्या है? Animal है and bird से. So animal or bird that feed mainly on dead plants and animals. Okay, especially dead animals, organisms. Plants भी चलते हैं. Okay, so animal or birds that feed on the remain of dead and decaying organism. Suppose हर्बिवोरस डाई हो गए, उनको कौन खाने वाला है? स्कैवेंजर. कार्निवोरस डाई हो गए, कौन खाने वाला है? स्कैवेंजर. ओमनिवोरस डाई होने वाला है, कौन खाने वाला है? स्कैवेंजर. इवन स्कैवेंजर में के एनिमल डाई हो गए तो उनको भी स्कैवेंजर्स. ओके, डिकम्पोजर्स भी है, बट डिकम्पोजर और स्कैवेंजर में डिफरेंस है. ओके, स्कैवेंजर क्या है? एनिमल है, बर्ड से, एंड डिकम्पोजर्स आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दोनों का काम सेम है, साइज में डिफरेंस है.
ओके, स्कैवेंजर कैसे है? एनिमल है, बर्ड्स है, बिग साइज है, एंड डिकम्पोजर्स आर स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दोनों का काम सेम है, टू ईट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। काम सेम है बट साइज में डिफरेंस है। ओके, सो स्कैवेंजर, मैं रिपीट, स्कैवेंजर्स, 1 मिनट, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस समझ में आ गए डियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गए? ओके, सो नेक्स्ट वन, स्कैवेंजर्स, animal or bird that feed mainly on the remain of dead and decaying organism are called scavenger. Scavenger help to clean the environment. स्कैवेंजर क्या करते हैं? सपोज यहाँ पे ग्राउंड में कोई तो डॉग डेड होके है, तो क्या हो जाएगा? वो वैसे ही रहा तो ओके, गैसेस बाहर निकलेंगे उनके बॉडी में से। सो स्कैवेंजर क्या करते हैं? हमारा एनवायरनमेंट क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज रिमेन ऑफ डेड एंड एनिमल इमिट द फोल स्मेल एंड मेनी डिसीज आर स्प्रेड। यदि स्कैवेंजर ने डेड एनिमल्स को नहीं खाया तो क्या होगा? मेनी डिसीजेस आर स्प्रेड। यस बेटा, वेरी गुड, यू कैन चैट, आप मैसेज शेयर कर सकते हो, मैं आपका चैटिंग पढ़ रही हूँ। ओके, सो this scavenger help to clean the environment. Example is vulture, crow, fox, hyena, jackal, crow. Those are the example of scavengers. Is it okay about the scavengers? Okay, now next one, that is host and parasites. Okay, now इसमें दो term है, that is host and next one parasites. Okay, there are the two terms, that is host and next one parasite. So this parasite depend on the host. Okay, this parasite do not make their own food, it take the ready-made food from the host. Okay, so parasite take the ready-made food from the host. Okay, parasite, yes, parasite do not make their own food, खुद का फूड बनाता नहीं, it take the ready-made food from the host. Now this parasite, there are the two type of parasite, that is ectoparasite and next one endoparasite. Okay, there are the two terms, that is ectoparasite and next one, that is endoparasite. Okay, ectoparasite and next one endoparasite. Those parasite which is present outside the body. Okay, body के outside पे रह के food लेता है, that is called ectoparasites. Very good example is mosquito. Okay, leech. Okay, then endoparasite, those parasite which is present inside the body of animals. कोई भी बॉडी के एनिमल्स के बॉडी के अंदर होता है, that is called endoparasite. For example, worm, छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको worms होते हैं. Okay, so मैं repeat again, organism that live on or inside the body of other living organism, they are called parasite. This parasite is completely depend on the host. Parasites are usually harm to the host. So worms, tapeworm, hookworm, they are endoparasites. Okay, human being के body में भी रहते हैं, other animals के. Okay, then next one, outside the body, they are called ectoparasites. Okay, so example of ectoparasite is mosquito, leech, fleas. Okay, lice, त्या डोक्यात उवा व्हायच्यात ना जुन्या काळी. Okay, they are also, ते काय, त्या उवा काय करायच्या, ब्लड सक करतात. Okay, so that one is also ectoparasite. जे बॉडीच्या बाहेरून आपलं ब्लड वगैरे सक करतात ते ectoparasite, आणि जे बॉडीच्या आतमध्ये राहतात ते endoparasites. Okay, and हा होऊ शकतो. फंगस इन्फेक्शन एक्सटर्नलला होतं ना, मग ते एक्टो मध्ये येईल. आउटसाइड द बॉडी म्हणजे एक्टो, इनसाइड द बॉडी एंडो.
ओके. छोटे लहान मुलं मुलींना वर्म्स जंत होतात बघा, त्यांना ते डॉक्टरांकडे नेतात. टेपवार्म, हुकवार्म, दज आर द एक्झाम्पल ऑफ एंडोपॅरासाइट्स. ओके डियर स्टुडंट्स. बॉडीच्या आतमध्ये जातो ना. येस. एक्टो. लाईस पण एक्टो आहे. So is it okay about the parasites, host and parasite? Yes. Okay, leech, ecto. Now next one, decomposers. Okay, next type, that is the decomposers. Okay, next type, that is the decomposers. Okay, scavenger and decomposer का काम same है. Okay, eat the dead animals. बट डिफरेंस है, मैंने क्या बोला, स्कैवेंजर बिग साइज के हैं, दैट इज द एनिमल एंड बर्ड्स है. एंड व्हाट अबाउट द डिकम्पोजर्स? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यस, ऑर्गेनिज्म दैट फेड ऑन डेड decaying plants and animals. That organism are called decomposers, and decomposers also play the important role to clean the environment and to return the nutrient to the environment. सपोज कोई एनिमल डेड हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको क्या कर लिया, खा लिया. एट दैट टाइम क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एनवायरमेंटल में रिलीज करता है. ओके, सो इट, यस, and that decomposing is prepared and that makes yes, but it takes time. Yes, fertility increases. Okay, so decomposer play the important role in recycling the nutrient to the environment. It Prajwal, you type the message better way. Okay. Then next one, it help to clean the environment. There are two main example of decomposers, that is bacteria and fungi. Okay, bacteria and fungi are the decomposers. Okay, is it okay, my dear students? Yes. Okay, now next one, that is the food chain. Prajwal Baheti, you type the message beta. I check message in chat box. Or in last 5 minutes we discuss. Okay, now next one, that is the food chain. Okay, next one, that is food chain. So in the nature, the living organism are depend on each other. So food chain shows the living organism depend on each other, and it tells us who eat whom. Okay, कौन किसको खाता है ये हमें समझ में आ जाता है. So every food chain, yes, yes. Host means okay, parasite is depend on the host. For example, human being is the host and mosquito suck my blood. So mosquito क्या हो गया? Parasite. And human being क्या हो गया? Host. Okay, parasite take the ready-made food from the host. ओके, कोई काउ एनिमल है तो काउ के बॉडी में यदि टेपवर्म चले गए तो टेपवर्म क्या हो गए? पैरासाइट. एंड काउ क्या हो गई? होस्ट. ओके, नाउ एवरी फूड चेन कंपल्सरी स्टार्ट विथ प्लांट्स. बट प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स. ओके, एवरी फूड चेन स्टार्ट with the producers. Now to these plants there are plant eater. Okay, plants को herbivores, but उसको हम क्या बोलेंगे? Primary consumers. So animal that depend on the plants for their food. Okay. No beta, sun is the ultimate source of energy, but green plants से start होती है food chain.
Okay, so every food chain start with the green plants, and हम green plants नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, producers. Okay, and animal that depend on the plant for their food, that animal is called consumers. Okay, animal that depend on the plants for the food, that animal are called consumers. Okay, there are the two type of consumers, that is the primary consumers. Okay, primary consumers. Okay, and next one, primary consumers eat the green plants. Then next one, that is secondary consumers. Then secondary consumers को खाने वाले tertiary. Okay, tertiary consumers. Okay, so may I repeat again? So every food chain start with the producers, that is the plants. So animal depend on the plants. That animal is called consumers. Consumers is again classified into primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers. Okay, herbivores such as rabbit, grasshopper, they are called primary consumers. स्पेशली हर्बियोर्स, सभी हर्बियोर्स किसमें आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स. देन द एनिमल दैट ईट द प्राइमरी कंज्यूमर, दे आर कॉल्ड secondary consumer, and secondary consumers are eaten by the tertiary consumers. Okay, so in the environment there are many food chain. Now okay board, इतना ही लिखा है बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड नेक्स्ट वन टर्शियरी कंज्यूमर्स. Okay, now when there are many food chain combined together or coexist, that is called food web. Okay, that is called food web. Okay, food web means the network of interconnected, okay, the network of interconnected food chain, that is called food web. Okay, food web में क्या होता है, many food chains are connected, and NSO में questions आते हैं, identify the food chain. Okay, identify the consumers, identify the producers. ओके, एंड अगेन ये जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स, ये सब डेड होने के बाद कौन आता है, स्कैवेंजर्स. ओके, एंड नहीं तो डिकम्पोजर्स. ओके, सो ये जो, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, देन primary consumers depend on the producers, secondary consumer depend on primary consumer, tertiary consumer depend on secondary depend on primary depend on producers. Okay, so like this, ये सब जो है सब डेड होने के बाद एंडिंग में कौन आता है, स्कैवेंजर्स. ओके, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर. आपके फूड चेन ऑब्जर्व करना है, उसमें एंडिंग में कौन है, स्टार्टिंग में कौन है. ओके, मोस्टली स्कैवेंजर के पिक्चर्स बताते हैं, डिकम्पोजर्स के कोई कोई फूड चेन में बता सकते हैं. सपोज बैक्टीरिया का पिक्चर दे दिया तो आपको आइडेंटिफाई करना है, दिस वन इज द डिकम्पोजर. ओके, एंड स्कैवेंजर का दे दिया तो दिस फूड चेन एंड विथ स्कैवेंजर्स. ओके, नाउ फूड चेन में भी कोई कोई फूड चेन में सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कोई कोई फूड चेन में 4 होते हैं, कोई कोई फूड चेन में 5 होते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, स्कैवेंजर हो गई 3 वाली. देन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, स्कैवेंजर हो गई 4 वाली. Then producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, scavenger. ये 5 चेन वाली, 5 लिंक वाली होगी. ओके, ऐसे फूड चेन 3, 4, 5 लिंक वाले फूड चेन होते हैं. एंड व्हेन मेनी फूड चेन आर कंबाइंड टुगेदर, दैट वन इज कॉल्ड फूड वेब. Today I have given you homework, that is you have to make the list of herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, host parasite, decomposer, and again I am showing you one picture and you have to note down how many food chain are present in that picture.
ओके, मैं आज ग्रुप पे ये पिक शेयर करने वाली हूँ। इसमें कितने फूड चेन है आपको आइडेंटिफाई करना है, नॉट आइडेंटिफाई, नोट डाउन करना है। फूड चेन नंबर 1, फूड चेन नंबर 2, फूड चेन नंबर 3, लाइक दिस। उसमें कितने मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे पीडीएफ शेयर की है, फिर से रीसेंड करती हूँ लगे तो। ओके, ये पिक्चर में शेयर करने वाली हूँ। यू हैव टू आइडेंटिफाई द फूड चेन, दैट वन इज द पिक्चर ऑफ फूड वेब। पिक्चर किसका है? फूड वेब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड वेब? व्हेन मेनी फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड। ओके, जिसमें मेनी फूड चेन इंटरकनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। ओके, जस्ट 1 minute. So here your chapter number 1 complete. ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। टुमारो आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। जस्ट 1 minute, आई अनम्यूट टू यू। होगी ना, टेस्ट भी होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, how the endoparasite enter our body? Yes. Ma'am, you take the test. No, a test is not here. Chapter number 1 completed. You have to study the chapter number 1. Written. Ma'am, how the endoparasite enter our body? Along with food atom, along with air, matters. Okay, small child से देखो, छोटे छोटे बच्चे सॉइल में खेलते हैं, तो उनके हैंड को जो सॉइल लगती है, उसके वे से उनके माउथ, थ्रू द माउथ दे आर एंटर इन द बॉडी। Ma'am, Yes. you revise staple fruit. Yes, one. You revise staple fruit. Okay, the food atom which we need on large proportion, that is called staple food. जो फूड आइटम हम ज्यादा प्रोपोर्शन में खाते हैं उसको बोलते हैं स्टेपल फूड। Ma'am. यस Ma'am, हो गया? Ma'am, यस। can you tell the examples of endoparasites? टेपवर्म, टेपवर्म, हुकवर्म, वर्म वर्म। Excuse me, ma'am. Test is What is Google after form or secondary written? consumer? Ma'am, test is Google form or written? नहीं बेटा, गूगल फॉर्म में नहीं रहेगी। मैं क्लास प्लस के ऐप पे शेयर करने वाली हूँ। एमसीक्यू की टेस्ट रहेगी। पहले आप चैप्टर की पढ़ाई तो करो 1-2 दिन। Yes, ma'am. But on app or in the group? पढ़ाई करो अच्छे से, बाद में टेस्ट लेंगे हम। Ma'am, I know what is after secondary consumer? यस। Ma'am, I not understand secondary membrane. ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स कार्नियोरस। Ma'am, it will come on app or in the group. बेटा पहले पढ़ाई करो, 1-2 दिन में मैं डिक्लेयर करती हूँ टेस्ट का। ओके, Ma'am, अभी कोई टेस्ट के बारे में पूछेगा नहीं। 1 minute, नो वन आस्क मी अबाउट द टेस्ट। पहले 2 दिन अच्छे से चैप्टर की 2-3 दिन चैप्टर की पढ़ाई करो, देन आई सेंड द टेस्ट ऑन द ऐप एंड दैट टेस्ट इज एमसीक्यू टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके Ma'am, सन्वी, what is after secondary consumer? प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स हर्बिवोरस एनिमल, सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स कार्निवोरस। Ma'am, we discuss exercise. Yes, exercise tomorrow I will discuss, no problem. Ma'am, boogie nahi, ma'am. Yes, Sanvi. Ma'am, what is the breeding of honeybees? Honeybee, yes, feeding. Growing them for honey. Apiculture, apiculture. Rearing of honeybee, that is called apiculture. And what is the spelling? APICULTURE. Thank you. Okay. Ma'am, So what's inspiration? apiculture, rearing of honeybee to obtain the honey, that is called apiculture. Okay, ma'am. Okay, I send the recording on the group. One time listen the recording. Here chapter number 1 completed.
tomorrow very fastly I discuss the exercise, and tomorrow I'm going to start chapter number 2. Okay, and you have to study 3 days. Chapter number 1 की Yes, पढ़ाई yes. वाले. After 3 Yes, days, ma'am. I will give you the test. Okay, and Okay, ma'am. again, all my dear students, you have to inform to your friends about the class. Okay, आपकी जो भी फर्स्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, सबको क्लास के बारे में इन्फॉर्म करना है. Sticker posters. Okay, Okay, ma'am. okay, bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am.